थैंक यू सभी बंधुओं को, फ्रेंड्स को। ये from my side, I welcome you to this interactive session. I thank Bill Singh, Director of the institution, inviting me to this program. So, there was मैं बहुत खुश था ये मीटिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोग 7 स्टेट्स और जो स्टेट्स हमारी मतलब बहुत वैल्यूएबल स्टेट्स, वैल्यूएबल एरिया, वैल्यूएबल पीपल, तो उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और थोड़ा कुछ बोलने के लिए थोड़ा बहुत आया। मेरा एरिया नहीं है, मैं रिटायर किया। मेरा तो फाइनेंस का एरिया, इन्वेस्टमेंट का और डेरिवेटिव का और मॉडलिंग का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, लेकिन मैं काम करता हूँ फार्मर्स के लिए। और रिटायरमेंट के बाद अभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर और जो अपना नेचुरोपैथी शुरू करके मेरा कुछ जमीन था, अभी फार्मर के साथ काम करता हूँ और खुद फार्मर में बनता हूँ, देखता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ कैसा चल रहा है। ये बात है जो बुक्स में पढ़ाते, वो लिस्ट तो बना देते हैं, लेकिन काम पे क्या होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवे, पहले मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कशन करने से पहले हम लोग थोड़ा देश को पहचाने, राष्ट्र को पहचाने। आपको पता है, इट्स द ओनली country in the world given birth to all the religions except Christianity and except Christians and Islam, but given shelter to all the religions in the world. This is the only country in the world having the highest number of languages spoken and written. Do you know 1621 languages are written and spoken? Except, forget about the scheduled language of the constitution. Do you know we have the largest number of tribes, ethnic groups in the world? You know how many? 7 or 5, but recognized. You forget about the unrecognized thousands. We have the largest number of climatic setups and conditions in the world as far as the biodiversity is concerned. And 10 conditions. Only country fulfills all the 10 conditions in the world. That is India, Bharat. Do you know we have per capita the largest number of mountain peaks in the world. Per capita the largest number of rivers in the world. Except there are two other countries are there. Had there been Bangladesh and Pakistan with us, would have been the largest number of everything in the world. You will be surprised. Indus is the oldest river in the world, that happens in India only. And we are the only country in the world we worship rivers as mother. So beautiful. As far as if you look at India, Indian culture, it's wonderful. Nowhere in the world. And हमारा जो साहित्य है, literature है ना, the best in the world. Can you imagine? We have the most scientific language in the world, that is Sanskrit. But the second oldest language in the world, that is Tamil. Imagine a country, India, and we should be proud of that. जो कुछ भारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है ब्रह्मांड में, ऐसे बोला जाता था, ऐसा था। जितनी सारी फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स वर्ल्ड में होता है, जो की टाइप ले लिया, कुछ भी टाइप, everything is there in India. Nowhere in the world such type of categories and types of vegetables, fruits, cereals and everything produced. Do you know about the flora and fauna? Why I wanted to meet you? You have the wonderful flora and fauna in the Northeast.
Nowhere in the world you have been declared as a UNESCO declared as a heritage. No, that's a biodiversity heritage. Nowhere in the world except Amazon. Can you imagine? अमेज़न तो छोड़ो, अमेज़न तो कितना देश जाता है और इतना बहुत सारी वो तो एक बहुत बड़ा एरिया है। फिर भी आप जो है ना वो हमारा मोड है, मोड मतलब मुकुट। ये बाजू का मुकुट आप, ईस्ट का मुकुट आप है, ये बाजू का मुकुट है कश्मीर। तो ये भारत माता के ये दो मुकुट है आप लोग। मैं कालिदास का जो लिखा हुआ है ना साहित्य, जितने से आप थोड़ा बहुत सुने होंगे ना, तो कुछ भी कुमार चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो नहीं सकता एंटायरली, बिकॉज साहित्य लो वो भाव के साथ आता है, वो भाव नहीं आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओ मैं सुन रहा था, नाश्ता कर रहा था ना, एक भाई हमें बोल रहे थे असमीज, सो दैट इज मोर क्लोजर टू उड़िया। उड़िया भाषा असमीज में ज्यादा एक्शन में फर्क नहीं है, almost same. Script different. I was just listening. I felt very happy. ऐसा असमीज लैंग्वेज में ऐसा लिटरेचर है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। उड़िया में लिटरेचर है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात, कवि सम्राट उपेंद्र भंज बहुत बड़े एक राजा थे, वो कवि बन गए उपेंद्र भंज करके। उसने लिखा हमारा बहुत से अनबद्ध सृष्टि किया। I mean, you know that Vedas Vilas, one of my friends here, like this, no? And you one stanza, he's inviting how I mean you make him now. I mean, proud, no? So, बताते हैं कैसे? देखी नवा कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी. This small sentence, I just ought 10 professors of English literature classes. Nobody. Because every word has 3 meanings. English has 1 meaning only. Every English word has 1 meaning. You can't have double meaning, is not there. But our literature is so strong. आप देखिए, even जितना हमारा राष्ट्र को बेटिंकर साहब ने क्या लिखे, नीरज ने क्या लिखे, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी नहीं था, थोड़ा सुन के देख के बाद में थोड़ा पढ़ के अभी बोलता हूँ। ये अद्भुत है, ये लैंड ऑफ वंडर्स ओनली। पुनः आर्किटेक्चर देखिए, विश्व के जितने आर्किटेक्चर है ना, सारे एक्चुअल हिंदुस्तान में। ये फ्रांस, ग्रीक बोलो, ये इंग्लिश बोलो, हिंदुस्तानी का बोलो, पर्शियन सभी यहाँ है। Look at the Konark temple. Which scientist built that temple? The Indian architect, no? The Indian traditional knowledge of building. Konark के नीचे का थोड़ी स्प्रिंग लगाया क्या? Konark इतना, और उसका जो टॉप में जो उसका क्या बोलते हैं उसको, दधिरौती हम लोग बोलते हैं उसको, हाँ, तो टॉप में दधिरौती करते हैं। जब हाँ शिखर है, तो वहाँ एक पत्थर था, पत्थर चुंबक, that was 10 tons. I know that was stolen by the Britishers, because the Britishers when they were दिग निरूपण करते थे ना, I mean दिशा निरूपण करते थे ना, वो कंपास लेके वो पत्थर गोलमाल कर देता था उनका, वो उसका कंपास नहीं चलता था। कहाँ से वो पत्थर लाया, कहाँ से चुंबक लाया और इतना ऊंचा उठाया कैसे? वो एक एक पत्थर 20-40 टन का है। Which technology was there? We have the best technology there. Go to Meenakshi temple, Rameshwaram, that side also. And all the temples in Tamil Nadu, because Tamil Nadu has the largest number of temples, more than 45,000. You know, India, Endowment Commission holds control over 330,000 temples. Can you imagine? And out of that, no, they get every year the government gets revenue of more than 4 billion. This is the only thing happens in India, nowhere in the world. कहीं government लेता नहीं ये religious institution को, यहाँ it happens in India. Good or bad, I don't say. Anyhow,
We are not a theocratic state, but democratic sovereign republic. But still, we have per capita largest number of churches in the world. The per capita largest number of recognized or unrecognized mosques in the world. Dargahs and all these things, the largest in the world. Can you imagine? Still we are not secular. Hell with you. What is the meaning of secular? I don't understand. Anyhow, the question is that music. They are stealing everything. They have stolen everything. One more example. We have the largest. If you look at the population-wise, numbers-wise, and the best of medicine system and health system in the world. Look at the Charak Samhita, Susruta Samhita, Unani, Ayurveda. ये सब हिंदुस्तान का जो मेडिसिन सिस्टम है ना, वर्ल्ड का the best. You know what? Charak Samhita and that what is that? Susruta Samhita. Susruta was medicine, and Charak was medicine. Susruta was surgery. The Europeans stole this theme and the books and original things from it, and they developed their own science. They are not original development of science. So we are. Imagine, you go to the internet पे available है, आप देख सकते हो. कोई कॉर्पोरेट नहीं पढ़ा था. मैं तो बहुत दिन कॉर्पोरेट बाद में कॉर्पोरेट पढ़ा, तब देखा मैं तो विस्मित हुआ. This is wonderful. What we are taught in public finance, people say ये क्या कितना कितना बुक्स पढ़े जो फॉरेनर्स वाले, तो हम तो फॉरेनर्स से पीछे भी जाते ना, क्योंकि फॉरेनर्स हमको स्लेव बनाया था. अभी भी वही मानसिकता है, स्लेविश एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, हैविंग द स्लेविश एटीट्यूड. तो देखा वो बुक्स क्या है, कहाँ से लगा. वो बुक्स में लिखा था 1976 पहले आर्ट वर्ल्ड कप नेशन से पहले. मैं देखा था वो तो आर्ट वर्ल्ड कप नेशन भी कुछ नहीं है. To manage this nation, a state, so everything, public finance led to the best thing now, corporate has written. How the mining, somebody was here, the pronunciation mine, I interact with him. The best thing he has done, how the revenue will be collected, revenues, fees, all these words were there. बाद में हम लोग उसको जब ये कोई फॉरेन वाला लेके भेजता है ना, वो बुक का पढ़ते और वो हार्वर्ड और क्या नाम ऑक्सफोर्ड, अरे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड दैट आर कंस्पिरेटर्स अगेंस्ट इंडिया and they looked at our original knowledge and selling that to us. Can you imagine? Presented that drug market. Drugs means the medicine and pharmaceutical. You know, we are the best in the world now. It was the best, only two. And we didn't propagate that Ayurveda, all those systems, no? We couldn't propagate. Now you see yoga. I am saying yoga is not for that, the sense you are talking about doing yoga. It's no way connected with the God. Remember, it's a science. Patanjali was not believing in God, so he developed that yoga. Asanas. Yes, ईश्वर के साथ संपर्क नहीं है इसमें. जो लोग बोलते हैं ना कि जो वो जीव परमात्मा जीवात्मा वो कनेक्शन आएगा, जो ये नहीं है. ये आपका बुद्धि विचार हार्ट माइंड बॉडी को कनेक्ट करता है. इट्स नॉट कनेक्टिंग टू ऑलमाइटी परमात्मा. वो कैसे सोचता है वो बात आ रही. देखिए ये हिंदुस्तान है. आप देखिए, we are the only oldest living civilization in the world. Out of 11 living civilizations, everybody gone. सब कहाँ के हम जिंदा है. ये कौन सी civilization? हमें झूठा तथ्य दिया गया था हिस्ट्री में जब पढ़ते थे बचपन में. ये इंडस वैली जो civilization बोलते थे, हड़प्पा मंजादरो. Look, now Saraswati civilization is being found, excavated, and it is more than 8,000 years old. So older than Mesopotamia. And we are taught something different. Strange. Now things are changing. So there is a change. There are two things. Religion doesn't change. Science changes. So both are two sides of the same coin.
As far as the Sanatana is concerned, we are the oldest religion in the world. Sanatana, not Hinduism. I tell you, there are two different things: Sanatana and Hinduism. That is, and dance. What I'm talking something that I'll tell you later. Dance forms. Imagine, you forget about folk dances. Every state has 20-30 folk dance forms. But we have got classical dance forms, 8 classical dance forms. Find in any country. No. And the Westerners, what they're doing, they are composing on basis of our forms and giving a name of hybrid. वो बोलते हैं हाइब्रिड हो जाए क्या इसको बोलते हैं दूसरा नाम बोलते हैं क्या फ्यूजन और फ्यूजन के नाम पे हमारे ले जाती चुरा के और आप लोग हम लोग कौन अरे अमेरिका से आया वो जापान से आया फ्यूजन क्या फ्यूजन ये तो अपनी माइंड फ्यूज करो पहले This is what we never try to realize what this country was. And look, India, हमारा संविधान में गलत है. संविधान में फर्स्ट सेंटेंस क्या है? प्रीएम्बल में लिखा ना, हमारे बड़े-बड़े महान पवित्र लोग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाषण हुआ, बहुत सारी चर्चा हुआ. आप अभी यूट्यूब में सब अवेलेबल आप पढ़िए. इंडिया का नाम कब आया? 1692 में नाम the name India came to India. I mean given by the Britishers. Look, before that what was that? Before that it was Bharat. Before that it was Jambudip. Before that Aryabharat. Look, the way things are changing. It is we are tolerating. We are the most tolerant nation in the world. Still international change, we are intolerant. What? This is what happening. So what you are, you don't show that. You are showing that what you are not. Look, Gita happens to be the best treatise on the earth on science, art and management. Now look, in management sciences, we teach Gita at the base. Gita के principles लेके एक श्लोक निकाल के उधर से सब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल निकालते. अभी यूट्यूब पे देखिए गीता का मैनेजमेंट लेके कितना मैनेजमेंट करते हैं, रामायण पे लेके कितना मैनेजमेंट करते हैं. गीता जो लिटरेचर, no doubt it has spiritual thinking, they are separate things, but scientifically written, connected literature, best of literature in the world. Ramayana, Mahabharata. You know, Ramayana understood, translated in the 180 countries in the world, the largest number of countries covering Ramayana. No other literature epic in the world covers such except Bible next second. Bible comes up second. But we are not proud of that. We are not proud of that. And NASA accepted Sanskrit as the best scientific language and the most fifth or sixth, seventh, कोई भी generation का highest generation का computer वो सोचता है कि whatever that's the most scientific language and the computer can talk to you in that and they do it. But we don't. I mean, हम लोग Sanskrit comes in the life. So we don't understand that. But it's India. And Islam, the fastest growing religion in the world, and that's in India. In India, in entire world, if you look at that entire Islam profession, Islam growing at the fastest rate in the world, that too because of India. Because still then we are Islam.
these things, no, हम लोग duality, dual personalities maintain करते हैं बहुत टाइम. इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बोलने की थोड़ा इच्छा हो रहा है. हाँ. And we are 1.4 billion Hindus. 94% of the global Hindus, they live in India. Only 6% outside somewhere. But the rest of the thing, look at that. Here, a lot of people from non-Indian origin, they have occupied. We have the largest number of, the only nation never attacked any nation. We have been attacked the largest number of times in the world. If you look at the history, take the invasions, record it. But we are told wrong things. So we believed in Purusharth. Indian value system, culture believed in Purusharth. Dharma, Arth, Kama, Moksha. ये चार पुरुषार्थ थे. हम लोग इसमें से हमें इसी में से करना चाहिए. नहीं. तो हमें क्या करें? Twinkle, little star. You have never seen the star. Your child never seen the star. Never seen, and we are talking twinkle. What the hell? That is the born. When the child is born, it's the most pious, pavitratam, the most genius, the best talent, it's the most closer, to the God and Lord. Because very pious, पवित्र होता है, वो भगवान को बहुत नजदीक होता है. उसका स्माइल जो होता है ना, वो नेक्स्ट टू भगवान का आशीर्वाद. ये that smile cures the diseases of parents. And child is pious, child is pavitratam, child is next to God. God smiles. But when you start sending child to school, bro, he becomes an idiot. Gurukul system, look, the traditional parampara, the best system was there to open the mind, make the mind creative, make everything free. As long as you make others free, that is the leadership quality is there, that is also community development, everything works here. I'll give you some examples of that. And that is actually creativeness. You are damaging the creativeness of child, you are committing a sin. I'm happy that my parents, हमें तो आश्रम में छोड़िए, और ये जो हम लोग पढ़े ना, हाफ पैंट पहन के उसको ऐसे पढ़ते, जो भी कुछ पाए, जो मिला पढ़ गए. और ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, बड़े को प्रणाम, बड़ों को इज्जत करो, छोटे को श्रद्धा करो, ये कहाँ है? अरे माँ बाप का श्रद्धा नहीं करते वेस्टर्नर्स. The child is kept out after 18. What is the family? The best system of governance in the society. Society is a congregation of families. And समाज राष्ट्र बनाता है, समाज बनाता है family, family बनाता है individual. ये ईमानदारी से बोला जाए ना, ये Western philosophy destroyed the family in India. Now आप देखो family में कितनी प्रॉब्लम था. जॉइंट फैमिली हम लोग रहते थे, क्या कितना मजा आता था. आज हम सोचते कि मेरे पर कब मार पड़ेगा, मेरे पर कब गाली मिलेगा, मेरे को कब खाना नहीं देगा. तो हम लोग छुप छुप के किसके बगीचा में क्या लूट के खाते थे. वो बांटता था, कितनी मजा आता था. नदी में बहते थे छुप के जाके, कितना मजा आता था. वो आँख तारा देखते थे और किसी का गन्ना की खेती में जाके खाते थे, वो भी पिटता था. ये जो है ना, ओपननेस का बात है. Your mind is open, your movement is, you are free to move. अरे हिंदुस्तान में कहीं कोई भी जा सकता है, फिर भी कहते हैं my movement is restricted. Hell with you, what restricted? You talk everything, you go everywhere, but your movement is restricted. That is the problem in India. And Gita is talking in Gita. Look, मैं इसका उपनिषद को आएगा जरा. वेद गीता उसका जो सारांश है ना, जो स्मॉल करके वो उपनिषद में लाए. हो गया, टाइम हो गया क्या? मैं तो सब्जेक्ट में नहीं आया अब तक.
एक कौटिल्य बहुत सारे बात में उठता था, कौटिल्य बोलता था, वो तो गायब हो गया। तो हम सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ये सब आप देखिए जो सारे 108 जो उपनिषद है ना, जो कुछ भी है, हम उसी बात को हम वेस्टर्नर्स लेके पढ़ा लेके हम उसको पढ़ा के इसको ऐसे देखते क्या क्या स्लाइड करेंगे। आप शुरू आप देखो किसने तो 10 बेस्ट उपनिषद आपको मैं नाम देता हूँ। अब देखो इसमें से कोई भी बात हमारे सारे के सारे टीचिंग में आता है। इसमें ये कम टाइम हो गया तो बड़ा मुश्किल हो गया। बनाया नहीं, कुछ प्रॉब्लम था, तो बनाया नहीं, इसलिए क्या रहता है। नहीं तो स्लाइड बनाया था, लिखना बहुत मुश्किल है इसको, ये सब वो बच्चे लोग नहीं बोलते लिखने के लिए। देखिए मुंडक उपनिषद, ये अथर्ववेद से आता है। इसमें एक संवाद है। ये उपनिषद क्या होता है? संवाद। कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आंसर करता है। यूजुअली मैनेजमेंट केस स्टडीज डिस्कशंस ओनली, हम लोग उसको नहीं पढ़ते। इसी को कोई अंग्रेजी लेके यूरोप से भेजते हैं ना, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। Oh, what a great unfortunately। देखिए इसमें से पराविद्या अपराविद्या, हम तो स्कूल भेजते बच्चे को पराविद्या, अपराविद्या से पराविद्या, ऐसा पराविद्या तो स्कूल भेजते हैं। बच्चे लोग जो रोजगार कर खाएंगे तो वो विद्या से बात आएगा। विद्या क्या है? विद्या सा विद्या जा विमुक्ति, मुक्ति का कारण विद्या। कौन सी कहां से मुक्ति, किधर से मुक्ति, ये सब पढ़ने का है। तो हम तो मुक्ति चाहते किसमें? हम चाहते स्कूल से मुक्ति, कॉलेज से मुक्ति, घर से मुक्ति, और सबसे मुक्ति चाहते हैं हम लोग हिमालय जाएंगे। वो तो बात है, टाइम नहीं। तो अपरा विद्या ब्रह्म ज्ञान, ये देखिए जब प्रसन्न उपनिषद देखे, इसमें पीपल आता, आज स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन होता है। It relates to how the students are advised to go with the elders, sit with them, surround with them, and learn from their experience. It's a case study. हम लोग बच्चों को भेजते बाहर जाओ, किसी को कैसे दूसरे के साथ कांटेक्ट में आओ, उनका एक्सपीरियंस का फायदा लो, उसका लर्निंग का फायदा लो। This is what the Upanishad says. Upanishad, the best Upanishad that हमारा विश्वगुरु क्या है? नहीं अमेरिकन भाषा 93 विवेकानंद केंद्र चलाता हूँ, याद नहीं आ रहा क्या उसका बेस्ट उपनिषद कठोपनिषद। उसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग, हाउ you are empowering students to make decisions, how they can make decisions, how they can differentiate between prayer और श्रेय। जो मन को लुभाता है, जो दिमाग को लुभाता है, दो चीज होता है, जो समाज को लुभाता है और आप खुद को लुभाता है। खुद को लुभाता है जो होता है वो प्रेय होता है, उसको नहीं करना है। श्रेय होता है जो दूसरे को लुभाता है, समाज को, ऐसे काम करो, ऐसे डिसीजन करो। ये कितना बढ़िया बताया है इसमें। तो कठोपनिषद है, केनोपनिषद में ये भी सामवेद से आता है। तो ये फिजिकल प्रेशर उसको नीचे रखते हैं, और बॉडी का जो प्रेशर है उसको नीचे रखते हैं, दिमाग का प्रेशर को ऊपर रखते हैं। मतलब यू डोंट बी स्लेव टू योर बॉडी, मेक योर बॉडी स्लेव। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दैट डूइंग। एंड ईसा परिषद है, ये इसको गांधी फॉलो करते थे। गांधी बोला सब जाए, कोई भी जाए, हिंदू धर्म भाड़ में जाए, लेकिन ये ईसा परिषद का फर्स्ट स्टैंडर्ड है। क्यों? उसको अच्छा लगता था। क्या बताए? ट्रस्टी उसमें से वो डेवलप किया, रिलेशन ऑफ ट्रस्टी। Nobody, nothing belongs to you, everything belongs to God. You take it as prasad. That was the concept in his life. Gandhi was telling something. Gandhi was not having anything, something, but it was something new. He told the same thing, and same thing. बाकी बहुत जगह में बोलता है, कोई भी बोलता है, तो बड़े बड़े ज्ञानी बोल जाते हैं। ये तो हमारी यह सृष्टि हुआ ना, क्रिएट हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद, यजुर्वेद में आता है। ये मोरल एथिक्स, हम जो मोरल एथिक्स पढ़ते हैं ना फिलोसफी में, लॉजिक्स में, ये इसमें से आता है। कोई सोचता नहीं इसमें आता है पितृदेव भव, मातृदेव भव, क्या कहते, अतिथि देव भव, ये कॉन्सेप्ट यही था। Now, look at others. Dev means
you are treating them in highest esteem, है ना? ये it's the best justice system from here. पक्षपात रहित जो सिस्टम है उसका मतलब विदाउट प्रेजुडिस। इसको जजेस लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना चाहिए उसको। तो क्या होता है? after operation about the creation, how the creation was there, God कैसे ईश्वर भगवान कैसे क्रिएट बनाया, बर्थ डेथ ये सब जो है ब्रह्म विद्या इसके बारे में आता है। And you must know who am I। ये सभी जगह बोलते हुआ मैं हूँ, अरे ये हुआ मैं का चर्चा कहाँ से हुआ? ये करते आखिर उपनिषद में हुआ। जल्दी बोले ना इसमें आता है हुआ माई सेल्फ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही आता है। हम लोग सभी बोलते हैं मैनेजमेंट यही आता है। तो छंदोग्य बागदारा जो करते कॉन्सेप्ट अल्टीमेट रियलाइज व्हाट इज द इनर सेल्फ एंड अल्टीमेट रियलाइज जो कोई बात करते हो दैट इज विदाउट नोइंग एनीथिंग यू कैन डू। आप लोग कुछ भी विश्वास मत करते, आप कुछ भी करते ना, मंत्र कोई पढ़ता है और मंत्र का मीनिंग मत समझो तो उसको बात करो। कोई काम करता है ना उसका इंपोर्टेंस समझो उसके बाद ये बेसिक मीनिंग इसका है। ऐसा तो बहुत कुछ है इसमें। ब्रोदर क्या इसमें आता है क्या? तो आधे इसमें जो आता है ना या तो बोलता हूँ अन्य मैत्रेय उसको वाइट का डिस्कशन we love others. When we love others, we love ourselves. Means the concept of love, prem, love, wonderful word. And this word makes a wonderful world to live in. You love rest of the world. That means you love yourself. Unless you love yourself, you can't love rest of the world. That's the concept. What a universal love. What a beautiful concept. We never bring these things to students. I request you, all of you, to bring these things to your students, to your local people. Let them understand Indian culture, philosophy, values. Now, मंडूको बिजनेस, मंडूको में आता है क्या? 4 स्टेप मन का आता है। इसमें आता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय। ये सारे तीनों जो ऊपर का बोला ना जागृत, इसको छोड़िए। ये रिडंडेंट नहीं। You go for तुरीय means pure consciousness. Pure consciousness means connecting to God. That is, then we are all vessels, not waves. If the God is, if compare, God is the ocean and you are all waves. If you look at that, no, then we become all vessels, not waves. And path to God. And these 10 things, no, and ऐसे पब्लिक बोलते हैं उपनिषद पढ़ के आप एक ही बात समझे। जितने सारे हैं हम सब एम्पावरमेंट मोटिवेशन सभी इसमें। What type of support you give to people to empower them? How do you? What type of support? What resources you provide? From where? When? How? And all should be right. Righteousness should be also there. Righteousness means dharma meaning righteousness. Righteousness means ये क्या बोलते हैं? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, अमरवत अर्थ जात से। इसका मतलब क्या है? सभी सुख के मूल में अर्थ है। चार पुरुषार्थ जो बोलते ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना हमारा, इसमें यही बात है। तो धर्म कुछ भी सुख आएगा ना आपको, तो धर्म के मूल उसका मूल धर्म होगा। और धर्म कैसे करेगा? अर्थ होगा। अर्थ कैसे करेगा? जो उसका काम होगा, ऐसे राज्य होगा। ये तीनों जरूरी है। अगर अर्थ आप उपार्जन करेंगे, अनर्थ के साथ, अधर्म के साथ, वो अनर्थ करेगा। That was the concept of ocean. And you know, everybody living means in India having tradition, having little idea about the culture of India, value system of India, and we think that our goal is all, everybody's goal, no, is Purusharth. Purusharth, जो human goal, that is dharma. Purusharth पहला है धर्म है. So धर्म सभी का यही goal of life होनी चाहिए. And this word, if you look at that, you know, every basic human rights are there. ये जो नहीं पढ़ते तो क्या करें इसको? तो बाकी यूएन में कुछ ह्यूमन राइट का पास करता कन्वेंशन, अरे क्या है रे? अरे सारे हमारे पास है, तुम इसको क्यों देखता है?
बना हुआ यहाँ। So धर्म मतलब धारयित इति धर्म, धारण करता है, समाज को बांध के रखता है, धर्म को धारण कर, राष्ट्र को धारण करता मतलब संगठित रखता है, सेफ रखता है, सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स, that is the part of this, all basic human rights are here. So that is, तो धर्म रक्षते रक्षितम्, इसमें क्या है, ये बात में वायदे हम सॉरी लेट हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा, ये सभी आपको बहुत धन्यवाद देता है। ये लोग को मतलब ये नागरिक जो काशी का नगर है, आपको पता है? Do you know the oldest city in the world? विश्व का सबसे पुराना सिटी काशी है। इमेजिन कीजिए, और विश्व का सबका पुराना सिटी काशी है, पुराना नगरी है। तो बाबा, ये जो बड़े है बाबा ना, ये पुराना देव ही है। ये जो माता जाती ना यहाँ, ये सब बहुत पुरानी है। ये ऐसा नहीं है, ये कोई नाम को ऐसा है। और सोचिए, take the civilizational aspects of India, I mean Hindus and Bharat, that is Jambudvip now, things will change. Please make little attempts, my sincere request, to bring things to your students, your classroom. इसमें अच्छे से ब्लॉग मतलब स्टोरीज भी है, उसको बताइए, वो समझ जाएगा। और बताइए, a nation is built by whom? Three people can destroy the nation. Who are they? Parents, father, mother and teacher. तीनों को हम देवता के स्थान देते हैं। तीनों को हम देवता के स्थान देते। जब ये तीनों राक्षस बन जाएंगे ना, तब राष्ट्र निकल जाएगा। पितृदेव, मातृदेव, गुरुदेव, ये तीनों नेशन बचाते हैं, बनाते हैं। अगर ये तीनों राक्षस बने ना, तो क्या होगा? नेशन निकल जाएंगे, नेशन राष्ट्र को निकल जाएंगे। तो पिता धर्म पिता सर्व पिता ही परम तप पितरी पितृवाम पर प्रियंत सर्वदम। इमानी का पिता का कहाँ जगह ये स्थान दिया है? जननी जन्म का स्वर्गात अभी गरीयसी, कहाँ माँ को कहाँ जगह दिया? जन्मभूमि को कहाँ जगह दिया? देखिए गुरु को, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु ब्रह्मा, ये तीनों को, गुरु माता पिता को कहाँ हम जगह दें? ये इसमें है ना, पितृदेव मातृदेव उपनिषद में है। ये तीनों नेशन बिल्डर्स, ये फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। Anyhow, so I couldn't do much. I'm sorry, I took a lot of time, and I think अभी दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा, कब टाइम मिलेगा तो आएगा। अब रिटायर हो गया। पैशन फॉर द वर्क, एब्सोल्युटली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे गाली दे रहा है, उसका फर्क नहीं। कोई मुझे क्या बोलता है, मुझे फर्क कुछ नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है what can I do for others? Yes. Hindu in a set of practice we are taking. Sanatana is the basic concept of framework. That difference. It's very old. ये धर्म सृष्टि नहीं है, अजन्मा है। हम लोग रिकॉर्ड दिखाते हैं 8000 साल का है, एक्चुअली अजन्मा। जब ईश्वर है, क्रिएशन है, तब सनातन है। ये अजन्मा है। ये वेद निश्चित कहाँ से आया? वेद कहाँ से आया? ईश्वर का मुख से आया ना, श्रुति है ना, वो लिखते नहीं थे, सुन के याद करते। तो ये हमारा जो सिस्टम है ना, पढ़ने। Sir, is it a folk knowledge? Shruti, is it a folk knowledge? Which one? Ved. आप मेरे को बताइए, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बात बताइए। Is it written? No. Then is it folk? Sorry, I forgot one thing to tell you. We have the largest constitution, lengthiest constitution to read in the world. You know? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबसे ज्यादा लंबी है, and we have amended the amended largest times in the world also. अभी तक 200 साल हो गया इंडियन का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को 2224 बार हुआ। हमारे कितने साल में कितना बार हुआ? 100 आगे गया। This is what India is. This is what you look at. हम लोग तो पढ़ते थे कलिंग युवार, अरे बुद्ध अशोक बुद्ध बन गए सन्यासी ना,
सम्राट अशोक। और कहाँ से वो देखा आप इतिहास में कहा है? यहाँ बुद्ध है, जैन है, जितने धर्म है। आप चाहे गुजरात में इजिप्ट से लोग इजराइल से लोग आगे बढ़े उधर बढ़े ना, कहाँ है? और हमारे जो यहाँ का जो सिस्टम है ना हिंदुस्तान का, सबसे अच्छा था, अभी अच्छा भी होगा अगर आप लोग सभी अभी उसको समझना चाहेंगे ना। We are on a move for change. आप देखिए, आप रास्ते से बढ़िया बढ़ गया। मैं अभी पूरी गया था, पूरी ना पूरी का उधर मेडल है ना, क्या ब्यूटीफुल प्लेस चेरापूंजी। अच्छा हाँ, चेरापूंजी के लाइक जगह विश्व में कहाँ है क्या? नहीं। आप जाइए देखिए, आपका जितना मैं सब देखा रखा हूँ, आपका नॉर्थ में जितना बढ़िया बढ़िया सब लैंग्वेजेस, फूड है, फूड यू नो, फूड बोल गया फूड। अरे फूड है ना, द बेस्ट फूड्स, द बेस्ट साइंटिफिक हेल्दी फूड दैट इज इन इंडिया ओनली। आप पिज्जा खाओगे ना तो इतना बड़ा हो जाएगा, बात डायबिटीज हो। मुझे नहीं होता डायबिटीज, हम सब खाते हैं, मछली खाते हैं, बेस्ट फूड। एंड ईस्टर्न में तो और बढ़िया फूड है। नॉर्थ ईस्ट में द बेस्ट ऑफ फूड्स, नो प्रोटीन, बैलेंस्ड फूड्स इन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यू नो। मैं खाओ बढ़िया। वो जो डिश है ना, कॉस्टली डिश है, बांस का, बांस बांबू shoots, that the costliest dish in the high mountain, but you are enjoying that without paying. I do enjoy. I have a bamboo farm, so मैं bamboo 200 कुछ ऐसा एरिया में है bamboo, बड़ा तो भी ना, bamboo का काम करता हूँ, jute का काम करता हूँ, jute, you know, when Bangladesh and India, we are the largest producer of jute and exporter. बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेश बना है सब, और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, you know. अभी केंद्र सरकार एक प्रोजेक्ट दिया है, एक जूट का 50 आदमी काम कर रहे हैं, वो जूट प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनोवेटिव आइटम्स। देखेंगे क्या हुआ, ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, बात करने बहुत कुछ है, लेकिन क्या है? थैंक यू।